The basic concept remains the same as we did in position lines, but there are some changes, and the question becomes a little more interesting. Transfer position circle becomes little more interesting. So let's jump into this topic and see transferring of a position circle. So let me set it up. Okay, beta. So we go into transferring of position circle. Let's see what all concepts are used in this transfer, and then we see the method of transferring it. Now, to benefit the most from this video, kindly be comfortable with the concept of position lines, position circles, allowing wind, allowing current, allowing both wind and current, running fixed concept, and transferring of position lines. All these topics have been covered in our earlier videos. In case you have any doubt about any of these topics, it is recommended that you go through those videos before proceeding further with this one. So beta, we have covered all these topics and understood all these concepts. So we will be using these concepts in transferring a position circle. Is the video and audio working fine, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta, great. Now, the minimum information that was learned by us required to draw a unique circle on a plane surface, and in our context, a unique position circle, is that we need to know or obtain its center and radius. So we need to carry out an exercise which gets us the center and the radius. Thus, transfer a circle, we must only transfer its center. Unlike the transfer of position lines, where we could have taken any point of our choice on the PL and run it up. In case of position circle, we do not have a choice. I repeat, we have to transfer its center and only center. That is, run up its center for the duration required. The transferred PC is then drawn through the transferred center and same radius as the radius of the circle being transferred. The method of transferring the center is the same as what we learned in the method for transferring any point on the PL. The time to which the PC is transferred may be indicated against the transferred PC plotted on the chart. Okay, so beta, go through these points one by one in your mind. Let me know any doubts coming.
Yes, sir. Clear. Very good, beta. Very good. Let's proceed ahead then. Now, how do we transfer the position circle? Let's list down the steps. First, we need to identify the center of the position circle. The center of the position circle will depend upon the method that has been used or deployed for obtaining the position circle. Imagine the vessel to be at that point. It is the center of the circle. For the duration of transfer, allow the following as applicable to this particular position, that is the center. Ship's propulsion displacement, comprising of the course she steered and the engine distance she covered during the interval. Wind allowed for through its leeway, and current allowed through its set and drift. The position thus obtained is the transferred center. Now, with this transferred center as the center of the circle and same radius as the radius of the EC to be transferred, we draw the transferred position circle. Now, let us quickly review the identification of a center, because as I said earlier, a while back, that the center of the position circle shall depend on the method which has been deployed to obtain the position circle. Now, if we have got a position circle by radar range, then the object whose range has been measured by radar acts as the center. And obviously the range is the radius. In case we have used the concept of horizontal angles, then the point of intersection of the angle arms drawn at the baseline becomes the center of the circle, and the distance from the center so obtained to either end of the baseline gives you the radius of the circle. Vertical angle, object whose vertical angle has been measured is the center, and the range calculated by vertical angle formula that we learned under the position circles is the range. Raising, dipping, first sighting, last sighting of the lights, the center is the light being sighted. And the sighting range, which is lesser of the geographical range and the present luminous range, constitutes the radius. High altitude celestial observations, in case they are applicable to your grade, the GP or the geographical position of the celestial body acts as the center, and the true zenith distance expressed in minutes is the radius of the position circle. Okay. Better now these high altitude observations are not in our current syllabus. They will come when you go in phase 1. When you do phase 1 chart work, then I will explain you this also. But other methods, radar range, horizontal angle, vertical angle, raising, dipping, first last sighting, we had done all these methods. So I hope all the methods are clear, beta. Yes, sir. Very good, beta. Very good. So if you want, you can take a screenshot of this. This gives you a summary of all the methods of position circles and how do we get the center and the radius. सर इसमें डेप्थ कंटूर वाला भी आ सकता है ना? बेटा डेप्थ कंटूर से पोजीशन सर्कल नहीं मिलता है ना, हम यहाँ पे पोजीशन सर्कल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। डेप्थ कंटूर से तो हमें एक रैंडम लाइन मिलती है, हैफेजर्ड लाइन मिलती है। ओके सर, तो जब मतलब सर्कल ट्रांसफर करेंगे तो उसमें उसका फिर रेडियस भी मायने रखेगा ना, क्योंकि रेंज तो जो है उसकी वो सेम ही रहेगी, रेडियस है जो। दैट्स राइट बेटा, जितना रेडियस पहले वाले सर्कल में था उतना ही ट्रांसफर्ड सर्कल में भी बनेगा। ओके सर। ओके, सो एनी मोर डाउट्स बेटा
Any more doubts in this or in this previous slide? Very good. So let's proceed ahead. As the center, and the true zenith distance expressed in minutes is the radius of the position circle. Now with this background to transferring of position circle, let us consider some examples in which we'll learn how to transfer the position circle. At 2000 hours, a vessel steering 250 degrees true at 12 knots observes Ballina Cotton Island light 5 miles off by radar. At 2045, Roche's Point light bore 000 degrees true. If there was no wind or current, find the position at 2000 hours, position at 2045, CMG and SMG. So no wind, no current, that means CTS and CMG are the same. Distance made good and engine distance would be same. So just read through this question carefully, beta. Let me know any doubts. सर तो जो स्पीड मेड गुड है वो तो सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि करंट और विंड तो है ही नहीं, वो तो शिप की स्पीड के सेम ही हो जाएगा. राइट बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे विल बी सेम क्योंकि कोई करंट और विंड नहीं है, सो इट विल बी सेम इन दिस केस. तो डी तो मतलब 12 नॉट्स हो गया. करेक्ट, दैट्स राइट बेटा. Okay, so if this is clear, then let's proceed ahead and see how this is plotted on the chart. So first we identify the landmarks. Here is the Ballycotton Island light. This one is the Roche's Point line. With Ballycotton Island as center and radius of 5 miles, that's the radar range. We draw the circle with C1 as the center, and this is the circle for 2000 hours. We have another position line at 2045. That means we have two observations. First one being a position circle, second one being a position line. They are staggered observations. So what we decide is we run up this 2000 hour position circle to 2045. So we apply the CTS at the center. Why? Because we've just learned that to transfer a position circle, you need to transfer its center. The CTS is represented by one arrow. In 45 minutes at 12 knots, the engine distance shall be 9 miles. So this is 250 degrees true into 9 miles. We get this point C2 out here. Now, in this case, as there is no wind and no current, obviously this CTS is also the CMG. So we represent it by two arrows on this out here. Now, obviously in this case, the distance made good would also be the same as the engine distance. And therefore, point C1 is transferred to point C2. So that means the center of 2000 position circle is transferred to C2. With C2 as center and radius of 5 miles, that was the same as the radius of 2000 hour circle, we draw the transferred position circle. The green circle, which has now come up on the chart, is the transferred position circle. That means at 2045, the vessel would be somewhere on the green circle. At 2045, the question also gives us a position line where Roche's Point light is bearing 000 degrees true. So we plot the 2045 PL. We have a 2045 PL and a 2045 position circle where the two intersect, that is point Y, becomes the position at 2045.
So beta, have a good look at the plot till now and let me know any doubts coming in your mind. सर अगर इसमें ये होता कि 20 100 पे निकालना होता, 20 100 का पोजीशन सर्कल, और फिर अगर पोजीशन लाइन भी दी होती 20 100 पे, तो डायरेक्ट मैं इसको इंटरसेक्ट करता, जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता वही मेरा 20 100 पे पोजीशन होती। हाँ बेटा, फिर तो बहुत सिंपल हो जाता। 20 100 पे आप पीसी बनाते, 20 100 पे पीएल बनाते, और जहाँ इंटरसेक्शन होती वहाँ फिक्स आ जाती। एक्चुअली वही चीज हम कर रहे हैं ना, इसको पोजीशन 20 45 की पोजीशन सर्कल ड्रॉ करके, और वो दो चीजों को मिला रहे हैं तभी पोजीशन आ रही है। यही कॉन्सेप्ट है ना सर? राइट बेटा, राइट। जो कॉन्सेप्ट अब यहाँ हम देख रहे हैं वो है कि पोजीशन सर्कल तो हमारे पास 20 100 का था, हमने उसे 20 45 पे ट्रांसफर कर दिया है। दैट इज द कॉन्सेप्ट विच वी आर सीइंग नाउ। सर अगर दोनों के ही पोजीशन सर्कल दिए होते तो फिर जहाँ पे वो दोनों पोजीशन सर्कल इंटरसेक्ट करते तो वो होती क्या पोजीशन? दैट्स राइट बेटा। अगर दोनों केसेस में पोजीशन सर्कल्स होते तो वेयर दे वुड इंटरसेक्ट, द ट्रांसफर्ड पोजीशन सर्कल एंड द सेकेंड पोजीशन सर्कल जहाँ पे भी होते वो हमारी फिक्स होती उस केस में। वैसा पर वाला सर भी एक उसमें तो फिर क्वेश्चन मैं आपको दो करवाऊंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते ना? Right, beta, right. So in that case, there will be 2 points where they will intersect. हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बेटा कोई ना कोई हिंट ज़रूर दिया होगा जिससे हम पता कर पाएंगे कि उन दोनों में से करेक्ट पोजीशन कौन सी है। या तो उनमें से एक पोजीशन ऑटोमेटिकली लैंड पे आ जाएगी या नॉन नेविगेबल वाटर्स में चली जाएगी, रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी, या फिर हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दिया जाएगा जिससे हम ये पता करेंगे कि दोनों में से कौन सी पोजीशन करेक्ट है। ओके सर। मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा जिसमें हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी। सर इसमें जो हमने सीटीएस और सीएमजी जो ड्रॉ करा है ये ऑलमोस्ट सर लैंड को टच करते हुए जा रहा है। राइट बेटा, दैट्स राइट। तो सर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ऑन चार्ट? यस बेटा, यू कैन ड्रॉ इट, बिकॉज ये जो सीटीएस सीएमजी हमने ड्रॉ किया है ना, ये शिप का एक्चुअल पाथ इंडिकेट नहीं कर रहा है। शिप का एक्चुअल पाथ तो कहीं और है जो अभी हम निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट। सो वी कैन ड्रॉ इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर इसको इससे टेंजेंट ड्रॉ करके नहीं कर सकते क्या सर? यू मीन टू से कि सेंटर पे अप्लाई करने की जगह पे इसे सरकमफ्रेंस पे अप्लाई कर दें, राइट? यस सर। ओके, तो पहला तो इसमें बेटा अगर मान लो हम इसको सरकमफ्रेंस पे अप्लाई करते हैं तो पहला डाउट जो मेरे माइंड में आएगा कि मैं किस पॉइंट पे इसे अप्लाई करूं। जो ब्लू कलर का पोजीशन सर्कल है, कौन सा पॉइंट लें? कंफ्यूजन आ जाएगा ना, विच पॉइंट शैल बी टेक। ओके सर। ओके, और अगर आप कोई पॉइंट ले भी लेते हो, मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया और हमने इसे ट्रांसफर कर दिया आगे, आप यहाँ पहुंच गए, अब ये दूसरे वाले को कैसे बनाएंगे बेटा? वो और भी दिक्कत वाली बात है। राइट बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड? और सर दूसरे वाले को भी सर अगर ऐसे ट्रांसफर कर दे जैसे हमने फर्स्ट में करा है तो? यू मीन टू से कि 2045 को पीछे ले आए 20 100 पे? नहीं सर, ओके मैं समझ गया सर, क्योंकि फिर आगे आ जाएगी, पोजीशन ही आगे आ जाएगी। ओके, सो इज द डाउट सॉर्टेड आउट? यस सर। ओके, ऑल राइट। और कोई डाउट बेटा यहाँ तक? वेरी गुड। जतिंदर बेटा है ना तू इधर? क्लियर है? हाँ सर, इधर ही क्लियर है सर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है बेटा।
चलो आगे. Obviously, in reaching position Y, the vessel would have made good a course, which is represented by C1, C2. So the CMG C1, C2 is transferred through Y, and magnitude also is equal to C1, equal to the magnitude of C1, C2. Now where this cuts the 20-100 hour circle, that is at point X, that becomes the fix at 20-100 hours. ओके. सो अब बेटा इसको ध्यान से देखो, मुझे बताओ क्या डाउट आ रहा है माइंड में आपके. सर ये रेड वाली लाइन को ट्रांसफर किया था नीचे. दैट्स राइट बेटा. जो ये रेड वाली लाइन है ना, रेड वाली C1 C2 लाइन जो थी, C1 C2 वाज रिप्रेजेंटिंग आवर CMG और CTS. इस केस में दोनों सेम है. हमने इसी को Y पे रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया है. ओके सर. सर अगर ये शिप की डायरेक्शन सेम ही है तो फिर 20-45 आवर्स पे ये जो लाइट की बेरिंग 000 आ रही थी, ये कैसे आएगी सर? बेटा मैं समझा नहीं, फिर से पूछो. सर हमें क्वेश्चन में दिया है ना 2045 आवर्स पे वो जो लाइट है वो उसकी बेरिंग 000 डिग्री ट्रू है. तो अगर शिप की डायरेक्शन ऐसे ही है तो उसकी बेरिंग 000 डिग्री ट्रू कैसे आई सर? यू मीन टू से कि अगर हमारा शिप इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो एरो लगाए हैं हमने, इस डायरेक्शन में शिप जा रहा है, तो लाइट नॉर्थ बियरिंग पे कैसे हो सकती है? यस सर. लाइट बेटा किस बियरिंग पे आएगी? अगर शिप हमारा ऐसे जा रहा है तो किस बियरिंग पे आएगी लाइट? अच्छा सॉरी सर, सॉरी, मैंने वो रिलेटिव बेरिंग ले लिया. ट्रू बेरिंग तो 0 ही होगी. ठीक है सर. वेरी गुड बेटा, यू अंडरस्टूड द पॉइंट नाउ. ग्रेट. और कोई डाउट आ रहा है बेटा, बताओ. लो सर. वेरी गुड बेटा, ग्रेट. सो हमने दोनों पोजीशन निकाल दी हैं, 2045 एंड 20-100. नाउ यू सी, ये जो बेटा XY ट्रैक है, XY ट्रैक, this is the actual track on which the ship has moved. So जो C1 C2 था, that was just drawn to transfer the position circle. It was not the actual track, so that's why it was going over land also. But the actual track on which the ship has moved is X to Y. So we are proceeding ahead now. Needless to say, point X is the 20-100 hour fix. Point Y is 2045 fix. X to Y is the CMG, and magnitude of X between X to Y, or distance between X and Y, is the distance made good in 45 minutes, from wherein we can convert it to distance made good in 1 hour, thus getting the speed made good. Now we take the same example, but now we introduce only wind. At 20-100 hours, a vessel steering 250 degrees true at 12 knots observes Ballina Cotton Island light 5 miles off by radar. At 20-45 hours, Roche's Point light bore 000 degrees true. If the vessel experienced northwesterly wind causing 3 degrees leeway, but no current, we need to find the two positions, CMG and SMG. First, we allow for wind. It is allowing for wind. Why? Because we know the CTS, we have to get the effective course. So beta, you see it is the same question, exactly same question, with only one difference, that there is wind in the area. So we will have to allow for the wind. So I'm sure we are all thorough with the wind. Allowing for wind, if you're thorough, then you could skip this step and the allowance could be made in the answer sheet. But let us still have a look at it.
This is the CTS of the vessel, 250 degrees true. Wind is northwesterly. Now the leeway shall be allowed to the lee side, that means to the port side. So we allow the leeway to the downwind side, and we get this as the effective course represented by single arrow. What do we see? Effective course or the leeway track is 247 degrees true. So I hope this is clear, beta. Yes, sir. Yes, sir. Very good, beta. Yes. Very good. In this case, the leeway got subtracted. The same thing you can see in the box now, we could do in the answer sheet through these three simple steps. CTS 250 degrees true, leeway 3 degrees northwesterly wind, as I said earlier, wind direction and the CTS have to be considered together to decide whether to add or subtract. So the effective course becomes 247 degrees true. Now, instead of drawing the CTS on the chart, we'll now draw the effective course or the leeway track, and the magnitude of this would be same as the engine distance in 45 minutes. So we plot it here now. So we have this as the Ballycotton Island light. We have the Roche's Point with C1 as the center and the radius of 5 miles. We draw the position circle for 2000 hours. Now to transfer it to 2045, we need to transfer C1. Since we have already allowed for wind and got the effective course as 247 degrees, we draw 247 through C1, represented by single arrow. On this, we mark off engine distance for 45 minutes, that's 9 miles. So 247 degrees into 9 miles, we get point C, C2. So that means now C1 is transferred to C2 because there is no current in this question. So with C2 as the center and 5 miles as the radius, we draw the transferred position circle. Why? Because C1, C2 is also the CMG and C1, C2 is also the distance made good. So we draw the transferred position circle. Green position circle is the position circle. Green position circle is the position circle for 2045. Now we draw the 2045 PL. This is 2045 PL, where the two intersect here. That is the position point Y. That is the position at 2045. Now we transfer C1, C2 both in direction and magnitude through Y, and where it cuts the 2000 hour position circle, this point X is the position of the vessel at 2000 hours. So X is the position at 2000 hours, Y is the position at 2045, XY is the course made good, and XY distance is the distance made good in 45 minutes, giving us the speed made good. So beta, have a good look at the plot. Let me know any doubts coming in your mind. सर रीवे एप्लीकेशन को लेके सर एक डाउट है. बोलो बेटा. सर इस केस में नहीं, मान लो अगर मेरा कोर्स है 093 और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 3 डिग्रीज ऑफ रीवे फ्रॉम ईस्ट, तो सर जब बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस होता है मेरे मतलब हेडिंग में और मेरे कोर्स में और जहाँ से मेरी विंड मेरे को लग रही है, तो उस केस में सर थोड़ा सा ये डाउट आ रहा है कि हम किधर को जाएंगे. अगर 093 मैं हेड कर रहा हूँ और अगर ईस्ट से विंड आ रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा 2 डिग्री रीवे पे 095. ओके बेटा, ओके. अब देखो बेटा, ऐसे केसेस में जब विंड हमारे बाव या स्टर्न से आती है, जैसे इस केस में इट इज कमिंग वेरी क्लोज टू द बाव, राइट? यस सर. तो ऐसे केसेस में बेटा जो लीवे एंगल है ये ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है. If you are steering 090 or you are steering 093 and wind is easterly, that means it is coming from 090. It is 3 degrees on your port bow. ऐसे केस में आपका लीवे will be effectively 0. जो लीवे एंगल है वो 0 हो जाएगा and practically you will not have to apply it. There will be no effect on your लीवे track or effective course. But अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया है
कि ईस्टर्ली विंड है, यू आर स्टीयरिंग 093 और 2 डिग्री का लीवे दे रखा है, तो आपने तो यही चेक करना है बेटा कि ये मेरे पोर्ट बाव से आ रही है, इट इज़ पुशिंग मी, सो लीवे इज़ 2 डिग्रीज, so my effective course would become 095 in that case. ओके सर, बस इतना से डाउट था क्योंकि कई क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए है सर ये पॉइंट। बट जनरली बेटा चार्टवर्क के जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अगर उसमें विंड को डाला जाता है ना, इट विल बी फार अवे फ्रॉम योर बाव और स्टर्न, सो दैट कोई डाउट ना रहे माइंड में कि हमने लीवे एंगल को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यूजुअली आप क्वेश्चन में देखोगे इट इज़ ब्रॉड ऑन द बाव, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीम से ही आती है, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि मुझे लीवे एंगल को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके सर। ओके, और डाउट्स बताओ बेटा। वेरी गुड बेटा। सो हमने ये ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन सर्कल को देखा है। दिस इज ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन सर्कल विद विंड। सर जब हम कोई पोजीशन सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी उसका टाइम डालेंगे जैसे आपने मेंशन करके रखा हुआ। हाँ दैट्स राइट बेटा। अगर आप देखो ब्लू सर्कल के साथ हमने 2000 का टाइम डाल दिया है, और ग्रीन सर्कल में जब इसे ट्रांसफ़र किया तो 2045 का टाइम डाल दिया है। ओके सर। ओके, और बताओ बेटा, और डाउट्स। ओके, अब बेटा एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि भाई आज के लिए ये बहुत हैवी हो गया और हाई लेवल अलार्म आना शुरू हो जाए, तो मुझे बता देना है, हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे। ओके, सो आर यू कंफर्टेबल? शैल वी प्रोसीड अहेड टू ट्रांसफर सर्कल विद करंट? यस सर। यस सर। यस सर। सर इसके एक क्वेश्चन और करा देते सर तो। हाँ करेंगे ना बेटा, अभी पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो समझ लें, क्वेश्चन तो अभी करेंगे बेटा, एक क्या बहुत सारे करेंगे, चिंता ना करो। ओके सर। यस। ओके, मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, उसमें हम पोजीशन सर्कल ट्रांसफ़र करेंगे, खूब ट्रांसफ़र करेंगे। सो अभी हम आगे चलते हैं। वी आर मूविंग ऑन टू ट्रांसफरिंग द पोजीशन सर्कल विद करंट। Now we take one more example wherein there is no wind but only current. At 2000 hours, a vessel steering 250 degrees true at 12 knots observes Bellina Cotton Island light 5 miles away radar. At 20:45 hours, washes light for 000 degrees true. If the current was setting south at 4 knots, but no wind, we have to find the two positions, CMG and SMG. सो बेटा सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, विद ओनली वन डिफरेंस that there is a current in the area. Right? So let us see now how do we transfer this position circle with the current. Since the current has to be factored, we ask a question, counteracting or allowing. CTS known, CMG to find, so obviously it's allowing. So we basically first draw the first position circle, both landmarks identified, with C1 as center, 5 miles as radius, we get the 2000 hour position circle. Now we have to run up C1 by 45 minutes, and we have to basically, we have the ship's propulsion displacement and current has to be allowed for. So we first draw the CTS of 250 through C1, single arrow, 45 minutes engine distance shall be 9 miles. We cut off that point and we get point A. A would be the DR, not really DR because the ship is not at C1. So, but if the ship was at C1, then she would have reached, the DR would be A. Now we allow the current at point A, which is the arrowhead end of the CTS line.
So southerly current is allowed here, represented by 3 arrows. Now, if the rate of current is 4 knots, drift in 45 minutes shall be 3 miles. We cut off 3 miles, we get point C2. C1 to C2 is now the course made good, and C1 to C2 is the distance made good in 45 minutes. Now, with C1 as the center, with C2 as the center and radius of 5 miles, we draw the position circle. The green one is the transferred position circle. That means the vessel shall be on the green position circle at 2045. Now we draw the 2045 PL through Roche's point, where the two intersect, that is point Y, is the 2045 fix. Through this, we draw C1, C2 through 2045 position, and where it cuts the 2000 hour position circle becomes position point X, and that is position at 2000 hours. So beta, have a good look at the plot and let me know the doubts. Clear beta, shall we move ahead? Yes, sir. ओके, ऑल राइट। अब बेटा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक हम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे, वन पोजीशन सर्कल, अनदर पोजीशन लाइन। सो नेक्स्ट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर वो समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में उसे रिपीट भी करवा दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स ट्राई टू सी द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट। लेट्स गो। X is the position at 2000 hours, Y is the position at 2045, XY is the CMG, and XY distance is the DMG in 45 minutes. In all these three examples, we had taken a combination of one position circle and one position line. Now let's take the last part of it. At 2000 hours, a vessel steering 253 degrees true at 12 knots observes Tusker Rock Light first sighted on its starboard bow at a range of 3.5 miles. At 2030 hours, Tusker Rock Light was last sighted at a range of 5 miles. If the current during this period was setting south at 4 knots and northwesterly wind caused a leeway of 3 degrees, we need to find position at 2000 hours, position at 2045, course made good, and the speed made good. Now in this case, we have two position circles. One position circle at 2000 hours where Tusker Rock Light was first sighted. That means it shall be drawn with Tusker Rock Light as the center and first sighting range of 3.5 miles as radius. So beta, just go through the question. Let me know if you are not able to understand anything.
Okay, very good, beta. So let's now see step by step. How do we go about solving this question? At 2030, we get another position circle with Tusker Rock Light as the center and the last sighting range of 5 miles as the radius. So if we want to use running fix in this, we can run up the 2000R position circle to 2030 and we can get the positions and the required information. Now, in this case, since we have to allow for both wind and current, so as we have already know, बेटा जब विंड और करंट के लिए अलाउ करते हैं तो पहले क्या अलाउ किया जाता है? सर पहले विंड Wind, फिर sir. करंट। सर विंड। Very good, beta. Very good. we first need to allow for wind followed by current. As far as allowance for wind is to be made, it can be made on the answer sheet. So CTS 253 degrees true. You can see the yellow highlighted. So beta, can you tell me what will be the effective course in this case? $250, sir. सर 250। Very good, beta. Very good. Information. Leeway 3 degrees northwesterly wind. So that means the wind is from the starboard side. Port side is the lee side or downwind side. So leeway will have to be subtracted. So the effective track or the effective course or the leeway track will be 250 degrees true. So when we have to allow for both wind and current, we allow for wind ideally on answer sheet and we use the effective course to plot. So now we first draw the 2000R position circle. We identify Tusker Rock. This is C1 with C1 as center and first sighting range of 3.5 miles acting as radius. We draw this position circle blue one. This is the position circle at 2000 hours. Now we have to run this circle up by 30 minutes to transfer it to 2030. That means we'll have to transfer the center C1. So we draw the effective course through C1 represented by single arrow. Now ship is doing an engine speed of 12 knots. So in half an hour, the engine distance shall be 6 miles. So we mark off 6 miles on it. We get this point A. Now wind allowed for. Now is the time to allow for current. By now we all know where is the current to be plotted. The current is to be plotted at A. So at point A, we plot the current and this current is plotted at A southerly, represented by 3 arrows. And since the current set is rate is 4 knots, in half an hour it will be 2 miles of drift and we get point C. That means C1 to C2 is the course made good and C1 to C2 is the distance made good in half an hour. In other words, C1 gets transferred to C2. So now with C2 as center and same radius of 3.5 miles as that of 2000R EC, we draw the transferred position circle, which is now shown here by the red position circle. So this is the transferred position circle for 2030. At 2030, we have another position circle, which can be drawn with Tusker Rock Light as the center and the last sighting range of 5 miles as radius. So beta, any doubt up to here? We have transferred the position circle now. No, sir. Very good, beta. So let's proceed ahead. So we draw that position circle. The green position circle is 2030 position circle obtained by using the last sighting observation of the Tusker Rock. So now this green position circle is for 2030. The red position circle is transferred circle from 2030. Now where they intersect? Now they intersect at this point out here and they also intersect at this point. Now these two could be the possible positions of the vessel at 2030 hours. Now, Beta, can you tell me which out of the two will be our fix? सर नीचे वाला सर। नीचे वाला। Right, beta. So in this case, there is no doubt because the upper position is going on land now. The vessel would already be a wreck.
सो हाँ बोलो बेटा। सर 2000 की होगी 3.5 माइल की, और 2030 की होगी C2 से लिए 5.5 माइल की। तो ये 2030 की ग्रीन सर्कल कहाँ से कैसे है सर? नहीं बेटा, नहीं नहीं, आप 2030 को ध्यान से पढ़ो बेटा। At 2030, Tusker Rock light was last sighted at 5 miles. So हाँ हमें सर। टस्कर रॉक पे सेंटर लेना है बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, ये C2 पॉइंट तो हमने बनाया है, यहाँ कोई लाइट हाउस नहीं है। ओके 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 ठीक है। ओके, टस्कर से 5 माइल्स का बनाया, तो उसको C2 पे बना दी गोला बना के। C2 पे तो ट्रांसफर्ड पोजीशन सर्कल ड्रॉ किया है बेटा। C1 से ट्रांसफर किया C2 पे, और टस्कर का 2030 का ग्रीन का बनाया 5 माइल्स का। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, लेट्स सी अहेड नाउ। In this case, we can see that this northerly position is in non-navigable waters, so it gets ruled out. So this one out here is the position of the vessel at 2030. This is 2030 position. Now we draw C1, C2 through this X and equal in magnitude, and where it cuts the 2000R position circle, we get point Y, which is 2000R position. Additional information given in this question to rule out the possibility was that only at 2000 hours, if this was the position at 2000 hours, then only the Tusker Rock would be on starboard bow. Had this northerly been positioned even in the navigable waters, then its corresponding position at 2000 hours would have Tusker Rock on her port side. So therefore, this point Y is 2000 hours position circle, X 2030 position circle, XY the CMG, and distance XY, the distance made good in half an hour. Double it up to get the speed made good. I hope with these examples, the concept of transfer of position circle is pretty clear to us. And this is where it comes. That means this position is ruled out. Okay beta, so this completes our transferring of the position circle. So let me know any doubts coming in the mind. You can actually download the video once we finish off the session. You can download the video, watch it again, maybe a couple of times, or you can go to YouTube also. We have it uploaded on this website, Marine Gurukul. So you watch this video and clarify what all doubts are there in your mind. Still, if any doubts remain, just note them down, and next lecture we will discuss all of them. So anything you want to ask now, beta? Yes sir. सर ये पूछना था सर, ग्रीन एंड ब्लू सर्कल है सर, जो हमारा इफेक्टिव कोर्स जा रहा है 2030 से और पॉइंट Y तक, मतलब 2000 तक, वो दो जगह ब्लू सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने पहले वाला क्यों नहीं किया सर? ओके बेटा, ओके। अब बेटा आप देखो C1 पॉइंट पे आ जाओ। हमने C1 पॉइंट पे अपनी एक ट्रायंगल बनाई थी, C1A C2। ये हमारी कोर्स डिस्टेंस एंड करंट वेक्टर ट्रायंगल है फॉर ए पीरियड ऑफ हाफ एन आवर, राइट? तो इसका मतलब है कि आधे घंटे में जो कोर्स मेड गुड और डिस्टेंस मेड गुड हमारा शिप कर रहा है वो C1 C2 है। यस सर। राइट। तो अब बेटा अगर मेरी एक्स पोजीशन है 2030 पे, तो जो 2000 वाली पोजीशन है वो भी तो इतने डिस्टेंस पे होनी चाहिए ना जितना C1 C2 का डिस्टेंस है। तो हमने जब इतना डिस्टेंस यहाँ पे बनाया तो ये ब्लू सर्कल के इस वाले पार्ट पे टच कर रहा है, इसलिए हमने वाई पोजीशन को लिया है और इस पोजीशन को छोड़ दिया है। ओके सर। ओके, और बताओ बेटा, और डाउट? सर ये चार्ट पे कैसे करना है सर, ये तो समझ आ गया। अगर इसको नोटबुक में कैसे करना है उसका एक ग्लिम्स दे सकते तो सर थोड़ी सी हेल्प होती। ओके बेटा, चार्ट प्लॉटिंग तो आपको यहाँ पे दिख गई है? यस सर। ओके, नोटबुक में बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ जो ये येलो हाइलाइटेड पोर्शन है ये लिखोगे आप, करेक्ट?
यस सर। और फिर इसके बाद डायरेक्टली आंसर लिखोगे आप। आंसर कैसे लिखोगे? ABCD बनाओगे आप अपनी आंसर शीट में। पोजीशन एट 2000 यहाँ से रीड करेंगे लेट लॉन्ग और अपनी आंसर शीट पे लिख देंगे। सेम वे B के आगे पोजीशन एट 2045। ओके, ये एक्चुअली 2030 है। इफ़ यू वांट वी कैन फाइंड एट 2045 ऑल्सो, बट 2030 की पोजीशन 2045 चाहिए तो इसको 15 मिनट आगे ले जाएंगे, हमें 2045 की पोजीशन भी मिल जाएगी, उसको हम लोग आंसर में लिख देंगे। कोर्स मेड गुड हम लोग रीड आउट करेंगे। XY या C1 C2 आप अपने पैरेलल रूलर से कंपास रोज से रीड करोगे, दोनों में से कोई भी रीड कर सकते हो, दोनों सेम है, और आप उसको आंसर में लिख दोगे। स्पीड मेड गुड आप मैयर करोगे, X to Y का जो डिस्टेंस है आधे घंटे के लिए है, हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्पीड मेड गुड आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। दैट इज द ओनली थिंग टू बी रिटन इन योर आंसर शीट फॉर दिस क्वेश्चन। सर तो इसमें जो करंट अलाउ किया है, करंट के लिए कैलकुलेशन किया है कि लाइक हाफ आवर की स्पीड 2 नॉट्स होगी, और वो सब कुछ भी नहीं लिखना आंसर शीट में। दैट कैन बी रिटन बेटा। जैसे करंट का जो रेट है वो 4 नॉट है, हमारी ड्रिफ्ट जो है ये 2 माइल होगी, सो दैट 1 लाइन यू कैन ऐड इन बिटवीन। सेम फॉर द इंजन डिस्टेंस ऑल्सो, हमारी स्पीड 12 नॉट्स है, हमने यहाँ पे 6 माइल का डिस्टेंस लिया है, तो 1 लाइन ये आप बीच में ऐड कर दोगे। ओके सर। सर ये इसका एक रफ स्केच भी बनाना है क्या आंसर शीट के अंदर, कि हमारा चार्ट के ऊपर स्केच ऐसा कुछ बना है? बेटा ज़रूरी नहीं होता रफ स्केच बनाना, सो अगर आप उसको नहीं भी बनाओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि चार्ट पे आपने प्लॉट बनाया हुआ है, रफ स्केच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओनली एडवांटेज द रफ स्केच गिव्स इज, उससे आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी बन जाती है, एंड एग्जामिनर मे गेट हैप्पी एंड मे गिव यू 1 or 2 मार्क्स मोर। सो अगर आप वो एक्स्ट्रा करना चाहते हो कर सकते हो, पर उसको तभी करना अगर आपके पास टाइम है बेटा। इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम देन डोंट मेक, क्योंकि उसको बनाने के चक्कर में अगर और कोई सवाल मिस हो गया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा बेटा, फ़ायदा कम होगा। ओके सर। ओके ओके, सो बेटा आप इसको वीडियो डाउनलोड करके दोबारा भी देखो, एंड और भी जो डाउट्स आपके माइंड में आते हैं उनको नोट कर लो नोटबुक में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे एंड वी विल सॉर्ट देम आउट। सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कवर्ड टुडे, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ ए पोजीशन सर्कल। सो नाउ अगर आपने इतना चार्ट वर्क कर लिया है, यू आर वेल ऑन योर वे, ऑलरेडी सेकंड मेट बन गए हो आप बेटा चार्ट वर्क में। सर COC सर फिर? COC वो तो मिल ही जाएगा बेटा, वो तो मिल ही जाएगा, उसकी तो टेंशन नहीं है कोई, क्योंकि देखो आपके हाथ में तो एफर्ट होता है। सो अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, असाइनमेंट आपने कर ली, आंसर आ गए, तो एज फार एज चार्ट वर्क इज कंसर्न्ड यू हैव रीच्ड अप टू द सेकंड मेट लेवल। सो COC तो मिल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो एनी ऑफ योर बैचमेट्स इन द सीनियर बैच ऑल्सो विच इज पासिंग आउट? Yes, sir. Okay. यस सर। So, how is, do you discuss chart work with those guys? नो सर। Okay. Any of your batchmates in other institutes also who are doing the course, कभी उनसे बात हुई बेटा regarding chart work? यस सर, फोस्मा वालों से। Okay. So, कैसे लगा आपको उनके कंपैरिजन में? Are you in a better position or are they in a better position? सर प्रैक्टिस के मामले हम में बेटर वो है पोजीशन में, उनको और कुछ भी नहीं थ्योरी आता के सर। मामले में हम है। Say again बेटा। सर प्रैक्टिस उनकी अच्छी हो रखी है और थ्योरी के मामले में हम लोग ज्यादा अच्छे हैं। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, प्रैक्टिस उनकी ज्यादा अच्छी हो रखी है। ओके, दे हैव कंप्लीटेड चार्ट वर्क, हो गई उनका चार्ट वर्क खत्म हो गया? सेम लेवल पे है सर, सेम लेवल पे है वो भी, वो लोग भी अभी ऑलमोस्ट यही कर रहे हैं। उनका एक हफ्ता पहले हुआ था ये वाला टॉपिक जो हमने किया अभी।
ओके, ऑल राइट। मैं आपके पास आया ही 1 महीना लेट ना, अगर पहले से होते तो अभी तक तो कहाँ कहाँ पहुंच गए होते हम। यस सर। ओके, एनीवे वी आर स्टिल वेरी मच कंफर्टेबल एज फार एज टाइम इज कंसर्न्ड। हम बड़े आराम से इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन बेटा। We can now break off, already overstretched. So see you in the next session, and till then, bye bye. बाय सर। थैंक यू Okay, bye. Thank you. सर।